Radhe Radhe children. As on Monday I told you, today we will be starting a new lesson in mathematics. Up till now, we have studied many chapters in maths. Now this is chapter number 4, quadratic equation. Now this chapter is a coordinate, that is somewhat related. You can take some help from a chapter number 2, that is polynomial. For this chapter, once again you are supposed to revise chapter number 2, that is polynomial. It is bit same to it. Now from that polynomial we were having 3 types of polynomial, that was linear, quadratic and cubic. Now from that polynomials, here we are picking up only one polynomial, that is quadratic. But that was polynomial and this is equation. See, there is a vast difference between a word polynomial and equation. Now, if I tell about equation, then obviously I am supposed to put equals to 0. Then only it is known as equation. If I don't put equals to 0, then it goes in the category of polynomial. So now this is equal to 0 and the standard form is ax square plus bx plus c is equals to 0 is known as standard form of quadratic equation. Now here a, b and c are known as coefficient and x is known as variable. हर बार याद रखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. उसके अंदर a, b एंड c हर बार कोएफिशिएंट होते हैं और जो x होता है वो आपका वेरिएबल होता है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर एक कंडीशन प्रिवेल होती है कंपल्सरी, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 0. आपका b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, पर आपका कोएफिशिएंट a कभी भी 0 नहीं होता. अब इस चैप्टर में आपको सीखना क्या है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं. ये इस चैप्टर की मेन थीम है. वी आर सपोज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव 3 मेथड्स विथ अस फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो पहली मेथड है उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, विच यू हैव लर्न इन 8th and 9th standard, actually in 7th standard also. 7th, 8th और 9th standard में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है. अगली जो मेथड है, सेकंड मेथड, उसे हम श्रीधर आचार्यस मेथड भी कहते हैं. ये सेकंड नंबर की मेथड है. और जो थर्ड नंबर की मेथड है उसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं. एक तो हमारे पास सॉल्व 2 चीज हैं, एक सम्स और एक प्रॉब्लम्स, प्लस शॉर्ट सम्स बेस्ड ऑन श्रीधर Acharya's theory. Actually, this is a complete सार of the whole chapter. इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही चीज है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड लर्न करनी है, श्रीधर आचार्यस मेथड लर्न करनी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लर्न करनी है. अब आपके पास आपको लर्न क्या करना है, तो इसमें आपको सम्स करने हैं, प्रॉब्लम्स करने हैं और कुछ शॉर्ट सम्स आएंगे आपके पास ऑन द बेस ऑफ श्रीधर आचार्यस थियरी. तो ये आपका मेन बेस है इस चैप्टर के लिए. अब हम इस चैप्टर को इस तरह से जाएंगे. हम पहले तो फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप. आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज 4.1 हम फैक्टराइजेशन के सारे सम्स करेंगे. फिर हम श्रीधर आचार्यस मेथड ये सारे सम्स करेंगे. फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के सम्स करेंगे एंड देन विल गो विथ प्रॉब्लम सम्स एंड देन शॉर्ट सम्स.
हम इस तरह से इस चैप्टर के अंदर मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट विल डू फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.1, फिर फैक्टराइजेशन के सम्स, फिर श्रीधर आचार्य के सम, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के सम्स, फिर सारे के सारे प्रॉब्लम्स एक साथ करेंगे और फिर सारे शॉर्ट सम्स करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मूव करेंगे बट अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो ओनली। नाउ exercise 4.1, here question number 1 is there, check whether the following are quadratic equations or not. Now here first question is given to you, that is x plus 1 the whole square, that is equals to 2 into x minus 3. Now to check whether the equation is a quadratic equation or not, we are supposed to get this, solve this and get in the form of quadratic equation. If I expand this, this is a plus b whole square. तो a plus b whole square की फॉर्मूला होती है a square plus 2ab plus b square. तो this is x square plus 2x plus 1. This is equals to, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो now this is 2x minus 6. If I bring all the terms to one side, therefore it can be written as x square, थोड़े बड़े लिखता हूँ, x square plus 2x minus 2x plus 1 plus 6 is equals to 0. Now we will solve this. X square, this and this gets cancelled, plus 7 is equals to 0. Now if you see here x square plus 7 is given, that is highest degree is 2. हम लोगों ने एक्चुअली जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जनरल फॉर्मूला दिया था तब मैंने बताया था कि जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 2, यानी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए तभी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, तो यहां पर आपको लिखना है यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ऑन योर नेक्स्ट सम इज, हम एक जैसे सम्स नहीं कर रहे हैं, हम इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के अंदर वी आर गोइंग विथ ऑल ऑड सम्स एंड इवन सम्स आर फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग द सम्स। द थर्ड नंबर सम मैं आपको यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा क्वेश्चन, सो यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम। x minus 2 x plus 1 is equals to x minus 1 x plus 3. x plus म्यूट कर पहले तो x plus 3. Now if I solve these sums, see on my left hand side it is x minus 2 x plus 1 and on my right hand side it is x minus 1 x plus 3. When you evaluate this, that is when you expand this, we could write, see your first term is same, so we could write this as x square then plus in the bracket minus 2 plus 1 into x plus minus 2 into 1. This is expansion of this. Same way here also x is common, तो हम expansion करेंगे तो this is x square plus this is minus 1 plus 3 into x plus minus 1 into 3. Now when you expand this, ये हो जाएगा x square, इसको आपने सॉल्व किया तो दिस इज माइनस x, minus 2 plus 1 is minus 1, तो minus x minus 2, this is this expansion. सेम वे यहाँ पर इवेल्युएट करोगे तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x minus 3. Now when I bring all the terms to one side, it becomes therefore x square minus x minus 2 minus x square minus 2x plus 3 is equals to 0. तो यहाँ पर x square और x square कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है यहाँ पे माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. या तो ये आपका हुआ या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जब आप दोनों केस में देखते हो यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, बिकॉज x स्क्वायर वाला टर्म आपके पास नहीं है, देन
I can say that because x square वाला टर्म नहीं है, so I can say कि this is not a quadratic equation. तो आंसर इसका है not a quadratic equation. So this is not your quadratic equation. Third number sum. See, same way, fourth number is also like this. Fifth is also. We'll do fifth number sum first. Fifth number here. Question is 2x minus 1, x minus 3, x plus 5 और x minus 1. अब देखो यहां पर दोनों के टर्म सेम नहीं है, यहां पर दोनों के टर्म सेम है, तो हम सिंपल ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे. Here we cannot apply the formula, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. तो वी आर सपोज टू गो विद बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन. सो पहले 2x से आई मल्टीप्लाई x minus 3, देन विद द हेल्प ऑफ 1 आई मल्टीप्लाई अगेन x minus 3. इसको भी हम इसी तरह से भी कर सकते हैं और हम उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं. डायरेक्टली करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, बिकॉज दिस टू टर्म्स आर सेम. तो दिस इनटू दिस, तो आई राइट हियर x स्क्वायर, देन हियर प्लस साइन, फिर यहाँ पे बच गया 5 और -1 इंटू एक्स प्लस this is 5 and -1 in the product form. Now when I multiply this, this is 2x square minus 3 2s are 6x minus x plus 3. इसे करोगे तो ये हो जाएगा x square plus 4x minus 5. इसको और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो now this is 2x square minus 7x plus 3. This is x square plus 4x minus 5. Now if I bring all the terms to one side, 2x square minus 7x plus 3 minus x square minus 4x plus 5 is equals to 0. अगर आप इन सबको सॉल्व करोगे तो लाइक टर्म्स आर 2x square minus x square is x square minus 7x minus 4 is minus 11x and this is plus 8 is equals to 0. Hence you have got an equation, final equation मिला है आपको x square minus 11x plus 8 is equals to 0. अब ये जो आपको इक्वेशन मिला है इसमें हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 है, so this is yes, it is a quadratic equation. Now, seventh number sum, x plus 2 whole cube. This is 2x into x square minus 1. Now this is in the form of a plus b whole cube. The formula for a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, or we can write this as a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, that is equals to, if I multiply this, this is 2x cube minus 2x. Expanding this, this is x cube plus 8 plus 3 2s are 6x into x plus 2, that is equals to 2x cube minus 2x. If I bring all the terms to one side, first I shall multiply this. This is x cube plus 8 plus 6x square plus 12x, 2x cube minus 2x. If I bring all the terms to one side, I write 2x cube minus 2x minus x cube minus 8 minus 6x square minus 12x is equals to 0. By solving this, this is 2x cube and this is x cube. So I get an answer x cube. Same way, this becomes minus 14x minus 6x square minus 8 is equals to 0. When I arrange this in decreasing order, this is x cube
minus 6x square is equals to 0. Now, when I get this equation, I get the highest power as 3. And the rule of quadratic equation is that the highest power must never be greater than 2. That must be 2 only. So your answer is no. It is not a quadratic equation. Now see, I am giving some sums to you for practice which are given in your books only. That is second number sum, x square minus 2x is equals to minus 2 into 3 minus x. Let me write here. Practice sums. Practice sums. Second number sum, x square minus 2x is equals to minus 2 into 3 minus x. Fourth number, x minus 3, 2x plus 1 is x into x plus 5. Sixth number, x square plus 3x plus 1, x minus 2 whole square. And eighth number sum, x cube minus 4x square minus x plus 1, x minus 2 whole cube. So these are the sums from the same exercise, whereas some example sums also I am giving to you here. X minus 2. These are some sums from example. X minus 2 whole square plus 1 is equals to 2x minus 3. Second number, x plus 1 plus 8, that is equals to x plus 2, x minus 2, third sum, x into 2x plus 3, that is equals to x square plus 1, and here fourth number sum, x plus 2 whole cube is equals to x cube minus 4. See, these are the sums for you for practice. These are practice sums to you. So this is homework for you. You can practice this all sums today and check whether they are a quadratic equation or not. Thank you and Radhe Radhe.